Hello student. In our previous video we talked about the planets and we talked about each and every planet which move around the sun. We also talked about the orbit, about the revolution, about the rotation. We also talked about the differences between the revolution and rotation of the planets. We also knew the name of all planets, and today we will discuss about the satellite. Planets and satellites are also the celestial bodies. First we know that satellites are the natural and artificial. Two artificial satellites are those which are made by the human beings, but today we will discuss about a very very important and a peculiar the celestial body. तो स्टूडेंट, आज जो हम बात करेंगे जिस सेलेशियल बॉडीज के बारे में, जिस आकाशीय पिंड के बारे में, दैट्स इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, एक विशेषण के रूप में यूज किया जाता है उसका. वी ऑलवेज गिव द एग्जाम्पल ऑफ अ ब्यूटी बाय दिस वर्ड. आप समझ गए होंगे किस चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे आज. लोग कहता है बराबर कि अरे इसका मुखड़ा तो क्या है, हाँ चांद का टुकड़ा है. ये बिल्कुल आज हम उस चांद के बारे में, जिसे वी न्यू इट एज चंदा मामा इन आवर चाइल्डहुड. आज हम उसी चंदा मामा के बारे में बात करेंगे बच्चों. तो चंदा मामा एक्चुअल में चंदा मामा नहीं, वो जो एक सेलेशियल बॉडीज है, एक सैटेलाइट है विच मूव्स अराउंड द अर्थ. तो लेट्स नो अबाउट द मून. मून, द अर्थ सैटेलाइट इज नोन एज द मून. It is 3,84,400 kilometer away from the Earth, which is relatively a closer distance. And the moon, like other satellites, shines by reflecting the light of the sun. We know that the moon has not its own light and heat. It is reflected by the light of the sun. जैसे हम मिरर को, जैसे मान लीजिए आईना होता है ना सबके घर में, सूर्य के सामने अगर आप आईना दिखाएंगे तो क्या होगा, ऐसे करेंगे तो ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा. चंदा मामा जो है, चंद्रमा जो है, द मून है, जस्ट स्टे ऑन इन द स्काई, एंड वेन एवर द सनलाइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ द मून, इट रिफ्लेक्ट ऑन द अर्थ. वो अर्थ पर रिफ्लेक्ट करता है. समझे. लाइट का रिफ्लेक्शन हम पढ़ेंगे, आप साइंस में पढ़िएगा अगले क्लास में, तो डिटेल में जानेंगे. लेकिन फिलहाल यहाँ जानिए कि द मून लाइक अदर सैटेलाइट साइंस by the reflecting of the light of the sun, and the moonlight reaches earth in 1.28 seconds. Students, we talked about the time taken by the light of sun to reach on the earth. Do you remember? That was 8 minutes 20 seconds, and the speed of the light 3 lakh kilometer per second. So the moon revolves around the earth in 20 days and 8 hours. कितने दिन में? 27 दिन और 8 घंटे में वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है चंद्रमा. And it also takes this much time to spin on its axis. अपने एक्सिस पर भी वो घूमने में एग्जैक्टली इतना ही लगभग टाइम वो लगाता है. और इसलिए स्टूडेंट, वो जो है, हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं. कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून. तो हमारा जवाब होगा कि मून टेक्स 27 days and 8 hours to complete one revolution to the earth, and the same time is taken to complete one rotation at its own axis. So due to the equal duration of rotation and revolution of the moon around the earth, we see only one side of the moon on the
earth. The other side always remain in dark. Space exploration in recent years have brought to light many facts about moon. The American astronauts, you know everybody, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, who landed on the surface of the moon on 29 July 1969, brought back to Earth some samples of लूनर रॉक मतलब चंद्रमा के जो वहाँ से चट्टान जो होते हैं. देयर इज़ नो एटमोसफेयर और वाटर ऑन द मून एंड द absence of atmosphere makes the day very hot and the nights very cold there on the moon. Its surface is, you know, strewn and with many craters, and it is very rough and uneven. The temperature during the day is about 100 degrees centigrade, and at night it falls to minus 150 degrees centigrade. Very recently frozen ice has, you know, also been discovered in a crater on the moon. You know, so do you know, Neil Armstrong was the first astronaut, you know, to step on the moon on 29th July 1969, and his footprints are still there. Our scientist, our scientist, you know, trying to go there. You know, the Rakesh Sharma, the squadron leader, you know, is the first Indian who went there in space in 1984. And once he was asked by then Prime Minister Indira Gandhi how our India is looking from there, he told, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. तो students, we knew about, you know, the moon, and this is the end of the chapter. You all have to do the question answer, and if you have any problem in this chapter, the earth in the solar system, you can ask the questions by, you know, directly, or by, you know, WhatsApp also. So thank you very much.